हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर इन केमिकल काइनेटिक्स, which is how to determine the order of a reaction. So there are various methods available for determining the order of a reaction. We have a graphical method. We can use your initial rate method. We can use integrated rate equation to calculate the order, or we can use half-life method, or there is some experimental method like Oswald isolation method as well. Okay, so let us see how they will work. First of all, we have a graphical method. So this method is used in case of those reaction which involves only one of the reactant. Okay, so the steps involved in such a case will be observing the concentration with time at different intervals. Okay, and then you have to plot the graph between the concentration and the time. Then you determine the instantaneous rate of reaction at different intervals by drawing the tangents. जैसे हमने पहले कहा था कि जब आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट करते हो, ठीक है, तो वो एक कर्व आता है, एक एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन आता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम में सपोज एट 10 मिनट्स और एट 20 मिनट्स यू ड्रॉ अ टेंजेंट एंड देन यू विल able to find out what is the difference. Okay, suppose this is the declining graph, ठीक है, between the concentration and time. Okay, so at this particular point you draw a tangent and determine the slope, that will be the rate of the reaction at that particular time. Okay, now what you have to do is you have to plot certain graph. First graph is reaction rate versus the concentration, reaction rate versus concentration square, then reaction rate versus concentration cube, and so on. और ये हम कर क्यों रहे हैं, let us find out. One, when you plot the rate versus concentration, if the rate constant k remains constant, it means that this rate is independent of concentration of the reactant. और ये किस केस में होता था, in case of zeroth order reaction. So your rate will be rate equal to k times a naught or a zero. But if we get a straight line, ठीक है, अगर मेरा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में मेरा प्लॉट है, ठीक है, this remains constant, this will be a zero order. If we get a straight line, this means the rate is directly proportional to the concentration, ठीक है, and that will be of the case of first order reaction. And if the plot of rate versus concentration square, this gets a straight line, then it will be a second order reaction. And if the rate versus concentration cube gets a straight line, we get a third order reaction. तो हमें sequentially start करना है. पहले हमने rate versus concentration को देखना है. अगर वो constant है तो मैं वहीं रुक जाता हूँ. I determine okay this is a zero order reaction. अगर वो constant नहीं आती है तो मैं क्या करता हूँ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन स्क्वायर को प्लॉट करता हूँ, ठीक है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ. और सिंपली आई सी इफ दिस इज गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, सिंपली रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की जो स्ट्रेट लाइन आती है दैट विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वहीं पे रेट स्क्वायर को प्लॉट करेंगे तो मेरी स्ट्रेट लाइन आती है दैट विल बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो ये फैक्टर डिटरमाइन करेगा कि मेरा कौन सा जो प्लॉट है वो मेरा स्ट्रेट लाइन देता है. सो दिस इज द graphical method of determining the rate of a reaction or order of a reaction. Then we have a graphical method. Okay, in case of graphical method you can also see this rate. अब हम यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं the disintegration of N2O5. Okay, so this concentration is declining with respect to time, and we have taken a tangent and we have calculated the rate. Now we are plotting rate versus concentration. As you can see, rate versus concentration getting a straight line. वहीं पे अगर मैं rate versus concentration square लेता हूँ, it is not getting a straight line. Okay, so that means the rate should be of first order reaction.
So rate law will be what? Rate is equals to K times N2O5 concentration, single power. Okay, so this is our first order reaction. Although आप यहाँ देखें stoichiometric coefficient is 2, so initial impression we get is that it must be of second order reaction, but this is not true. From graphical method we have find out this is of first order reaction. So let us look at the another method to calculate the order of a reaction, which is initial rate method. So graphical method cannot work if the reactant is more than one. ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मल्टीपल है तो हम उसको मेजर नहीं कर पाते. उस केस में हम इनिशियल रेट मेथड की मदद लेते हैं. सो दिस मेथड रिक्वायर्स measuring the initial rate of reaction without changing the concentration appreciably. So suppose we have a reaction like this, 2A plus 2B plus C is giving you a product. So initially हम rate of reaction को find out करते हैं with a known concentration of A, B and C. We have this one now. So once it is find out, now we change the concentration of one of the reactant. Suppose A की हम concentration को change करते हैं, मैं इसको half कर सकता हूँ या इसको double कर देता हूँ concentration को, keeping the other two constant. Okay, and now again I find out the rate of reaction. ठीक है, simply if rate of reaction becomes 4 times by doubling the concentration, it means the rate of reaction is a square, is a second order with respect to this concentration A. Okay, in a similar way we can do it for B and C. मैं ऐसे ही क्या कर सकता हूँ, मैं B की concentration को डबल कर देता हूँ, keeping the A and C constant. ठीक है, similarly C की concentration को आप डबल कर दीजिए, keeping the A and B constant, and see if the rate of reaction changes. So combining all those things you will get the overall order of the expression. सपोज मैंने जब कंसंट्रेशन ऑफ ए मैंने बढ़ाई थी, डबल करी थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गई थी, तो मेरे को पता चला कि इट मस्ट बी अ स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने डबल किया, अगर मैंने बी की कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई. दैट मीन्स इट बी अ सिंगल ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. अगर मैंने सी की कंसंट्रेशन को चेंज किया, डबल किया, और रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया, सो दिस मस्ट बी जीरोथ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी. सो द ओवरऑल ऑर्डर विल बी 2 plus 1 plus 0 is equals to 3. So that is an initial rate method. So let's discuss a question here. The 3 experimental runs were carried out and this reaction where chlorine is combining with nitrogen oxide, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोक्साइड, एंड गिविंग यू नाइट्रोसल क्लोराइड. ओके, सो दिस डेटा वर रिपोर्टेड. ओके, इन द फर्स्ट केस एज यू कैन सी you have concentration of chlorine 0.02 molar, okay, and 0.01 molar NO, and the initial rate is given. Similarly यहाँ पे सेकेंड स्टेप में देखें तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन सेम रखी है और यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है. ठीक है, तो रेट के अंदर क्या चेंज आया उन्होंने ऑब्जर्व किया. ऐसे ही नेक्स्ट में उन्होंने क्लोरीन की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है और NO की कंसंट्रेशन सेम रखी है और रेट को ऑब्जर्व किया है. अब आपसे 3 चीज पूछी जा रही हैं. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2 एंड NO, द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट. 3 things have been asked from you and this is a question being asked in the previous examinations. So first of all, in general we can write the rate law as rate should be equal to K times the concentration of Cl2 to the power m and concentration of NO to the power n. We have to find out what is the value of m and n. ठीक है, individual order of a reaction. Okay, and the rate constant as well. So if the equation 1 is valid, ठीक है, in that case हम first run में देखते हैं, run will be equal to what? Your rate of reaction जो हमें given है, this is equal to K times 0.02 to the power m, 0.01 to the power n. ये concentrations भी हमें टेबल में given है और rates given है, तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ जाती हैं.
ठीक है, rate of reaction, concentration with respect to Cl2 and NO, and M, N and K we have to find out. So dividing this equation 3 by 2, you will get what? Divide run 2 divided by run 3. ठीक है, तो मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ये 0.02 की जो फैक्टर्स हैं ये सारे कैंसिल हो जाएंगे. वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस वन n. Okay, 0.030 to the power n and 0.01 to the power n. K will also cancel out here, and rate of reaction is already given to you. Okay, so simplifying this, you will get your 9 will be equal to 3 to the power n. So that means what, your n should be equal to 2. Okay, so we have find out the order with respect to NO should be equal to 2. Similarly, you can do for another runs. You divide run 3 by run 1, and similarly you can get what, your 2 is equals to 2 to the power m, or simply order with respect to Cl2 will be equal to 1. So the overall order will be 3, 2 plus 1. Okay, so this we have find out. हमें ऑर्डर पता लग गया है, ओवरऑल ऑर्डर पता लग गया है. ठीक है, हमें रेट एक्सप्रेशन हमें पता लग गया. नाउ वी हैव टू वर्क ऑन फाइंडिंग द रेट कांस्टेंट. ओके, so your rate constant is K will be equal to rate divided by concentration of Cl2 and NO to the power 2, क्योंकि हमें ऑर्डर पता लग चुका है. अब आप कोई भी एक्सप्रेशन लें और वहाँ से रेट को ऐड कर दें, उनकी कंसंट्रेशन को, orders you have already known. So using the any of the experimental run, you can easily calculate the rate constant. All right, so three things we have measured using the initial rate method. First, we calculated the order of a reaction, then rate expression is there, then from rate expression and order we can calculate the rate constant. Now looking at the temperature dependence of rate constant, that is your Arrhenius equation. Arrhenius equation says that your rate constant K is equals to A times exponential of minus EA upon RT, where A is a frequency factor or an Arrhenius constant. EA is the energy of activation for that particular reaction. So both A and EA, they are the characteristic of that particular reaction. So taking a log on both of the sides, you will get ln K is equals to ln A minus EA by RT. Now you differentiate with respect to temperature, you will get your d ln K by dt is equals to EA upon RT square. Or similarly, we can convert it into natural log. We have your d log K by dt is equals to EA upon 2.303 RT square. Okay, now you integrate these expression between their corresponding limits. You have your going from K1 to K2. अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा. सो सिमिलरली अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं इस एक्सप्रेशन को, यू गेट योर log K2 by K1 इज इक्वल्स टू EA by 2.303 R into T2 minus T1 by T2 T1. Okay, so this expression also you can use for calculating the rate constant or calculating the activation energy if these other values are given to you. ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं अक्सर इस इक्वेशन से, Arrhenius equation से. In the graph as well, as you can see, if you plot ln K versus 1 by T, ln K is being plotted versus 1 upon T. So the slope will be what? Minus EA by R. This negative slope is equals to minus EA upon R. So the activation of energy, ये भी हम यहाँ से calculate कर सकते हैं using this graph as well. So using the expression also you can calculate activation energy. Using the graph as well you can calculate your activation energy. So similarly, if rate constant at two different temperatures are known, this will help you in determining the energy of activation. So this is all about the various methods of calculating the rate of a reaction. So thank you. In the next class we are going to discuss more about the theories of the reaction rates. Alright,
So keep learning. Thank you.